He serves as a remote coordinator for monthly webinars at the Ed Lab Foundation, where she fosters meaningful dialogues among educators and leaders. She also takes a leading role in organizing annual educational events and symposiums. Farheen unwavering dedication to education, coupled with her expertise in professional development and event management, position her as a trailblazer in educational leadership and advocacy. So her session we are having in a recorded form, and we are very much thankful to her that she has fulfilled her commitment and sent it. And now I'm going to share with you the session of Ms. Farheen, so you people are ready to check it. Wait for a while. I have to share my screen and I have to wait for a while kindly. I also have a signals issue, and twice I have just out of the meeting, and the system is working slow. So kindly please bear with me and wait for a while. In the meantime, Ms. Rafia is here, and I'm really thankful for all the participants. I request Ms. Rafia kindly play if you want to share something with our participants of today. So you are most welcome. Thank you, Meher. Assalamu alaikum, everyone, and welcome to the second day and the first presentation of the camp. हमने तो कल inauguration किया और our international director was introduced through her session on continuing professional development. Ms. Hannah spoke about well-being while continuing professional development, which is very, very important. And that is what we emphasized yesterday, that teachers need to know who they are as individuals, what are their strengths, which are the areas where they need to develop themselves and become better. And at the same time, they have to keep progressing as a teacher and developing their expertise, skills through indulging in professional training programs offered from various platforms. I take pride in initiating this teacher leadership even before pandemic, and because I am a staunch believer that teachers are leaders of their classrooms and they should have the right to decide what content their students need, what strategy their students need, what extracurricular they should participate in to become holistic learners for their holistic learning and developing into the well-rounded personalities that all of us as teachers, as heads, and as parents want our children to be. So with Pakistani youth being 65% of the entire population, it is all the more important that we inculcate and bring forward the leadership skills in teachers so that they are able to pass it on to the students in their classrooms. And the future needs of being critical thinkers, problem solvers is fulfilled, and that is only possible when the teachers themselves are critical thinkers and problem solvers and developing their own skills to lead their classrooms, to lead the students, to lead their subject. Yes. Can you people see the screen shared? Yes. Okay. So thank you so much, Ms. Rafia, for the yesterday's briefing, as many of the people were yesterday as well, and today they are also here. During summer break without due payment. So yesterday we also highlighted this fact that during this camp, we are also going to bring forward people who will talk to you about the labor law, about your rights as a teacher, as well as
how you can become a stronger, better, confident teacher who knows what she's doing and who knows how she has to lead her students. So this is just a quick recap of yesterday. So thank you, Meher, for giving me this opportunity, and over to you now. Thank you so much, Ms. Rafia. Yes, now the presentation of Ms. Farheen is ready. You all are most Mr. watch it. Ms. Meher, इसको full screen पे please shift Ms. कीजिएगा. Yes, I'm sharing it as a full screen. Thank you. So kindly please watch it. And if you have any questions and queries, you are most welcome to write in a chat so we can address after this listening. Thank you so much, everyone. Now kindly please watch it. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the International Virtual Teacher Leadership Camp 2025. The theme of this camp is Empowering the Architects of the Future. My name is Farheen Hassan, and my topic for today is integrating STL into everyday teaching. Let's start the session. Okay, so my topic for today is integrating STL into everyday teaching. This is my brief introduction. So I am doing my MS in Women in Educational Leadership role. I am an IB certified teacher and a Cambridge certified trainer, career coach, and an OT practitioner. I'm working as a remedial therapist and a wellness coordinator at an institute school, and I'm also affiliated with Atlas Pakistan as a remote manager operation. I'm also serving voluntarily at various institutions like SPEL, Asia Chapel, the Education, and Care Foundation. I like to regularly present at various conferences and to be part of trainings and sessions locally and internationally. Okay, so today's objective is, first we are going to understand what STL is, and we'll also look at the 5 core competencies of STL. Then we'll go to the practical strategies one by one that can be easily embedded into everyday teaching. We'll also experience a few hands-on activities, not just for the students, for ourselves as educators. Finally, we'll take time to reflect on our own self-care, because teachers' well-being is very important and crucial. So let's start. Now, what is STL? STL is equipping students with the skills they need to thrive in school and in life. It's about helping them understand and manage their emotions, set goals, build relationships, and make responsible decisions. Now, think of STL as a foundation that supports both academic success and life success. STL is defined as the process through which individuals develop and apply skills, knowledge, attitudes, manage emotions, set goals, build relationships, making responsible decisions, and ultimately supporting success and life. Now, if we look at the exact definition of social and emotional learning, so social and emotional learning is defined. Okay, it's defined as a process through which individuals develop and apply knowledge, skills, and attitude to manage emotions. So it actually helps the individuals develop healthy identity, manage emotions, and achieving goals. It also helps them to have some empathy and building relationships and making responsible decisions. Now, what are the benefits? It can improve attendance, fewer disciplinary incidents, and even the benefits. Now, why STL? What's the reason
Why should we implement it? Why should we invest time in SEL when there is already so much to teach? Why should we teachers take a lot of time in developing social and emotional learning in the students? So it improves academic outcomes. Students who feel emotionally safe and connected, they learn better. It also reduces behavioral issues and strengthens the classroom environment, creating a space where both teaching and learning become easier. And it actually helps them perform better in their exams as well. So social emotional learning is concerned with fostering children's social and emotional skills within the educational setting alongside their academic skills. It also enhances academic outcomes, as I said, and well-being, improves student engagement, reduces disruptions, and improves school planning. So as I said, is social emotional learning की वजह से behavioral issues जो है वो reduce जाते हैं, and then classroom is then a safe place for learning and for teaching. Now, what are the 5 competencies of social and emotional learning? So we are going to use the CASTLE framework, which is a well-known framework. CASTLE is a leading organization, and it outlines 5 core competencies. We unpack each one by one with examples, so you can start recognizing them in your classrooms right away. Now, all of these competencies, they are not standalone traits. They are interconnected and they grow with practice and modeling. So we'll talk about this in this next slide. I would just like to give you a brief, introduction, a brief explanation about this. If you can see, the 4 competencies are in the middle, and then the classroom climate is the outside boundary. That means these all competencies, if carried out in the classroom, then it's a safe place, and if it's carried out in the school-wide culture, then it is implemented within the child, and of course it can fall out to families, the caregivers, and then to the community. All right, so moving on, we are going to talk about what are the SEL competencies. So, social emotional learning is the process of developing self-awareness, self-management, social awareness, relationship skills, responsible decision. Now we are going to understand each one step by step. So the 5 core competencies of SEL. Self-awareness means recognizing emotions, values, strengths, and limitations. Now how we'll do it, we'll understand this in detail. Then self-management, which is regulating your own emotions, managing your stress, setting goals effectively. Then the third one is social awareness, which is showing empathy, understanding diverse perspectives, and respecting others. Now, if you can see that social awareness, if you are aware of your emotions, then you come to managing those emotions, and then you become socially aware of your surroundings. Then comes the relationship skills. Now, if you master all these 4, all these 3, then you have a good relationship with your peers, you're building healthy relationships, you're communicating effectively, and resolving conflicts. Now, here comes the responsible decision making. Now, if you're good at all 4, then you have this capability to make ethical choices, considering consequences, and of course, taking responsibility of your decision. Okay. Now, self-awareness. Self-awareness means helping students identify their emotions, understand what they're good at, and where they're struggle. Now, how can a teacher do that? Now, teachers can help the students. Let me give an example. Now, here is the example. When a student realizes they feel anxious before presentation and learns to identify that emotion instead of acting out. Sometimes,
when it comes to assembly presentations or debate competitions, anything that, you know, if a child has a fear of public speaking and they don't know what they're going through, and maybe they're just acting out that they are calm, cool, but deep inside they are feeling fear, they're scared. So if they don't know that what they are feeling through, then they will just, make it as a, you know, make it as it is. But if the teacher is helping the student recognize that emotion, in that way they will be able to build their, let's say if the child has a fear of public speaking, and if he knows it, then he's able to overcome by maybe practicing more, by maybe speaking in the mirror, or deep inside, practicing more and more. Okay, so a teacher can help students recognize their emotions. Now, if a child doesn't know the name of the emotion and they're just acting out, then it is very hard for them to manage. Okay, so managing emotions, first you have to make yourself aware of them. All right, now moving on, then we have self-management. Now, once a student recognizes how they feel, the next step is learning how to manage them. Now, self-management includes coping with stress, staying focused, and working towards your goals. Now, how to manage your stress? If you are feeling stressed, some people, they get stressed when there's a lot of workload. Some people, they feel stressed when there are noise around them. Some people feel stressed when there is, anything that triggers the stress. So how to manage your specific emotion, how you will manage it. You can maybe do simple breathing exercise, or maybe, at times we do that case when we have this public presentation, public speaking thing, a debate competition or an assembly presentation, you should tell your students how to overcome your anxiety while you are speaking in public. Maybe you can look around, counting, or maybe you can see at the faces of the people so that you will feel relaxed. So these are little things that we do. Now here I have given the breathing technique. There are lots and lots of other techniques that you can use. You can go to the washroom before your public speaking thing, or maybe a closed room, and then you feel like a tiger, and you feel yourself very much powerful, so that when you go and present in front of public, you will feel a brave person. You will feel, you feel yourself as a brave person, and then you will be able to perform them. Okay, so these things can be done before any debate competition, maybe a drama, or any stage of your that a child can. Now, this is not only the thing that comes with public speaking. Sometimes people get angry. They get angry when they don't have that thing which is with somebody else. We feel jealous. So these are all emotions. We feel sad. We feel overexcited. So only stress is not an emotion. There are other emotions as well, like anger, frustration, jealous, excited, sad, any other thing. Now, how to manage that specific emotion is how you can deal with it. Okay. Now, the next thing is social awareness. Now, this specific competency is all about empathy and respect. It's about helping students notice how others feel and respond with compassion. Now, you may have experienced this, that diverse classrooms. This skill helps build understanding and acceptance. Now, let me share my notes with you. So, if you are able to understand and empathize with others, somebody, maybe sometimes the students feel, and they have this kind of understanding that if I get good marks,
my friend, my closest friend, who is not good in math, she feels that when I show my marks to her. So how do you cope up with that? You don't show her. Maybe you boost herself before showing your marks to her, or maybe you don't. Sometimes you cannot show them, or maybe you can just first appreciate that girl, for whatever marks she got, and then show her your. Another example is that another example is that a class is upstairs, and if he asks that if they're okay, so you show some care and support. At times, there are deaths in the family, and maybe there's somebody who is very sick. Grandparents are, taken to the hospital. Sometimes parents have, some deadly diseases. So it's where you can check with your classmates. And now, in order to inculcate this understanding and feeling of empathy in the students, teachers should make them understand. Teachers should teach this skills in the students. So this is social awareness and also competency, which can be registered in the students and who can implement it. Okay, now we discussed in the end that how to do that, but we are not only explaining it, understanding these competencies. Okay. Now relationship skills. Now, sometimes when it comes to relationship skills, how many times do we see that group work go wrong? Sometimes we assign project work and we see that the students are not working as they should be working, and there's a conflict, or there is some maybe mishandling of the stuff, or anything that the group work has gone wrong. So now relationship skills help students listen, express themselves respectfully, and resolve conflicts. Now, this is a soft skill that we need to inculcate in students, because this will help them in their life, in their future life, in their practical life. And of course, school is the best place to practice them, because we are building their basics here. They will go to college, nobody is going to teach them the social and emotional learning. So school is the ground, the best place to learn this, to practice. Okay. Now, forming and maintaining healthy and rewarding relationships with others. Now, what are the skills? The skills that are included in relationship skills is effective communication, teamwork, collaboration, conflict resolution, and help. A student listens during a group project, shares ideas respectfully, and helps solve disagreements. Now, where do disagreements happen? When we don't have the kids to listen to each other, listen to diverse people, or sometimes we go overboard. I have seen students, sometimes they're so efficient that they don't want others to speak up, and they just take the charge of the whole project. So this is also not a good skill, that you take the lead and you don't give the chance to other students. So as a teacher, we need to instill this skill into our students, that whenever there is a project, we need to accept other team members as a group, as a team. They're all working for a specific cause or a project. So they should all have, an equal and fair chance. Okay. So as a teacher, we need to instill this skill into our students. Okay. Now conflict arises when sometimes the students were, ऐसा भी होता है कि group में अगर कोई दो students हैं, both of them are very efficient, they have proficient skills, and they don't want to compete with each other. So in that way,
वहां पर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आता है कि एक काम करना ज्यादा चाहता है और दूसरा एक काम करना ज्यादा चाहता है, तो वहां पर थोड़ा एक मसला आता है. So as teachers we need to discuss this, that we need to understand each and every student and need to give fair chances to everyone. Okay, now next and the last competency, which is responsible decision. Now this competency is all about making thoughtful choices, not just in academics but socially and emotionally too. Now students learn to think through the consequences, evaluate options and make ethical decisions. Now even if a small act like maybe standing up against any bullying behavior is also an example of this competency in action. Now let's suppose there's a group of students teasing some other student, and you as maybe opposite, being an opposite one to your friend group, and you are opposing that behavior. So that is also very responsible decision maker. Okay, so you have to think about what are the consequences, what are the choices, and what is the social appropriation. So you need to evaluate the choices and make decisions accordingly. Now, the skills that are included in this, the skills that are included in order to get that competency is evaluating consequences of action, reflecting on ethics and safety, and solving problems. Okay, now we have discussed the five competencies of SEL, which was a CASEL framework. Now let's talk about the actual benefits. Now, research shows that SEL improves test scores, reduces weight, increases student engagement. In short, SEL is not the extra burden for teachers. It's actually essential to improve the academic performance, making a classroom safe place for students in learning and supporting each other. And it actually engages the students more, and they feel they take charge of the learning. It fosters a sense of belonging, and of course it leads to the long-term success and linked to higher employment rates and better mental health outcomes. So social emotional learning is the base of leading to a better mental health place, mental health outcome. So we often talk about mental health, well-being. So if we put social emotional learning into place, we will get all these things in the class. Now, here are some simple and effective activities to try. Emotion charrette, which builds emotional vocabulary. Gratitude journal that fosters positivity. Role playing that allows students to walk in someone else's shoes. Mindful moments create a pause that can reset the entire classroom. So we are going to talk about each and everything in the next slide, and you will be able to implement it in the classroom. Now, how to do it in the classroom? You can mix and match these based on whatever age groups and needs of your classroom. Now, let's suppose for check-in circles or emotion thermometers. This can help students express how they are feeling. You can use it with a grade 4 group, or you can use it with a grade 10 student. Now, it depends whatever you are using. You can use it for your teachers. Now, these types of activities can be used for any age. All right. Okay. Now, embedding SEL into practice. Now, first is check-in circle. Circle time or check-in circle. It's actually a very powerful way to build classroom community. As you can see in the picture, students are, gathered around the teachers. They're sitting in a circle. It's a space where everyone, including the teacher, feels safe because they're facing each other. They are taking a moment, they're taking a time out to share how they're feeling or something on their mind.
It creates a safe environment where students feel seen and heard because they are looking at each other face to face. Now over here, what type of prompts you can use? Maybe you can use one word to describe your mood today. Okay. Sometimes you can use maybe compliment the person next to you with one word, one positive word. You can give them a band. If you think the students are very little, maybe they are grade 3 or 4, so you can give them a bank of words that they can use in order to compliment. If they're grown up, grade 10, 11, 9, 10, 11, whatever grade groups you are dealing with, you can just give a prompt. You can use another prompt like something you're proud of this week, you're proud within this week, or any achievement that you encountered this week. So this, if you're doing this on a regular basis, it fosters trust, empathy, and connection among students. They feel safe, they look forward to these activities, and whenever there is a circle time, you need to set some rules, and then the children will be able to follow. So first, in the very first circle, you need to foster, you need to tell them the rules, and then in the next one, the next circle, you will not be able to, you don't have to say each and everything again. They'll be able to understand it and then perform what they are doing. Okay, now brain break. Now brain breaks are short active, 1 to 3 minutes that refreshes students' mind between lessons. And brain breaks actually help with focus, stress relief, and energy regulation. Now you can try. Sorry, I don't have light today, so that's why I'm a little bit exhausted. Okay, so you can try stretching or movement games, breathing exercises, quick games like I'm in safe, please run, even silent doodling or coloring. These tiny parts improve concentration and self-regulation. Now you can see there are some of the activities that are mentioned in the infographic. You can go outdoors, meditate, pet a dog, play an instrument, listen to music, stretch, walk, go bowling, draw blindfolded, hula hoop, mini bowl, write a journal, dance in the room, juggle, and then there are other benefits that are written here, which I already mentioned that it increases productivity, your motivation, your creativity level, your problem solving skills, your mood, your self-awareness. So these are the activities that you can do in order to free yourself, in order to make yourself relaxed. Okay. So in order to manage it, now this is the self-management. This is not a this is a competency that you will be able to instill using this strategy, because this can help in managing yours. The previous activity, that's the circle time, that was a self-awareness. Because if you are sitting in a circle and you are asking the student that how you are feeling today, and if he's saying, if there's a list you have given them, sad, excited, so they are naming their emotions right now, whatever they are feeling. If they're feeling sad, so they will be aware that I am sad right now. So when you are giving them these vocabulary, these emotional vocabulary, so they not emotional vocabulary, emotions vocabulary, so they will be able to identify whatever emotions they are feeling right now. So that is self-awareness, means you are making yourself aware of your emotions, and our brain break comes into managing your emotions. Okay, so this is something to self-manage. Now, conflict cards. Conflict cards are a great way to teach conflict resolution in controlled and effective manner. You give student cards with real life based scenarios like your friend didn't pick you for their team, or someone made fun of your project. Now, how to deal with it? So if you are practicing this in your regular school activities, if you are practicing this in your well-being periods, or you are taking out time, I know it varies from school. Some schools have their social emotional periods,
some people, in some schools, they call it as a social and personal period, or in some schools, they say it as a well-being period, well-being slot. So whatever you have, if you won't have any slot, try to take out time from your own schedule and, spend at least 15 to 20 minutes on your well-being part. Okay, because as I showed you the campus framework, so it starts with the school and then it's, scattered in family and then caregivers and then to the whole community. In this way, a student can feel for other school fellow or the students studying in other schools and students I have seen students in the schools where they they make projects for they actually raise funds for other schools, other underprivileged students. So these are all the skills that still in their school, in the school system, and then they follow it for the whole community. Okay, so now conflict resolution flashcards. These are very effective because students can work in pairs or small groups, act out and discuss how to respond calmly and constructively. Now this comes in the social awareness or maybe the responsible decision making as well. So it overlaps that. You can use it for any conflict. Moving on, we have now emotion thermometer. Emotion thermometer is also an activity that can be used to identify your emotions, means making yourself aware of your emotions. So as you can see at the thermometer, that the blue one is actually happy, calm, proud, confident, peaceful. So you can maybe place this thermometer in your class and you can ask the students which color are you right now? Are you blue? Are you green? Are you yellow? Are you orange? Or are you red? So in this way, the students will be able to identify that which color I am right now. And they can, compare themselves that if I'm blue, that means I'm happy, I'm calm, I'm proud, confident, and peaceful. And if I'm green or I'm yellow and I'm orange and I'm red, that means that my emotions are getting into the red zone or the orange. That means that I am going towards the negative side. So you can, give them the concept of positive and negative side through, by using the emotion thermometer, taking it to account. So they can point out or mark where they are emotionally at the start or during the day or end of the day. Maybe they were sad when they came to school in the morning and they are blue when they are leaving the school. So you can maybe use it as an entry or an exit slip so that you will be able to know that when the student came, he was red, but then when he's leaving the school, he's green or blue. So that means you have done something for the child in order to make them feel safe or secure in the school environment. And it's also built their emotional vocabulary and give teachers early warning signs to, whenever there is the teacher stands to intervene. There is the yellow zone or orange zone. At that time, teachers, can ask them that what's bothering, what is the problem, what's the issue that you are feeling right now. Okay, so this activity can be used for that. Now, gratitude circle. This is also these that I've shown you earlier. Gratitude circle, or you can say a gratitude game or gratitude worksheet. So these are few examples here. The circle one that you are seeing here, you can make a circle using this and you can write on the the triangle that I'm thankful for whatever it is. A child rotates the circle and he can feel this, that I'm thankful for whatever it is that I am. And here I'm grateful for worksheet B. You can write in your heart or square or rectangle what are the things that you are grateful for. And you can see this chart as well.
name of person, you are thankful for red. Name of place, you are thankful for orange. So these are the colors that you can use as a key for, your gratitude, show your gratitude. So this activity also builds a positive mindset and helps you focus from what's missing to what's working, and actually increases the resilience and optimism in students. And they will be grateful for whatever they have. So that in that case, they will not be, it can be either big or small, but they should be grateful for at least, one single thing in a day. All right, and this, of course, it will increase for others. Okay, now scenarios, role play. Role play is actually a hands-on method to develop empathy and practice social skills. Now, this is similar to conflict cards, but like it's up to you that you can give this a kind of a scenario that helping a student solving a group disagreement or apologizing after an argument. So this is actually a kind of a conflict card role play scenarios. You can give these how might you feel, what can you do in that situation if you are in this situation. Okay, these are all the activities that you use in your classroom, and there are lots and lots of resources available, checklists, templates available on Pinterest, Canva, you name it, and you will find it. Now, the idea of SEL is actually a very long concept, but in Pakistan, or maybe you can say worldwide, it's actually बहुत ज़्यादा जो है वो हमने जो grow होते हुए देखा है. It is actually after COVID. The reason is that before COVID, students were coming to school and teachers were not able to identify what is happening in their houses. But when it comes to remote classroom, at that time, teachers were able to see that if the child is going through something, or if the child is maybe he has not the capability or capacity to, cope up with the class, he must have not have any device. So these are the, some equity issues that were there. And the teachers, in schools, teachers are not able to identify them. But when it came to classroom, online classroom, the teachers were the ones who went into their houses to teach, because our computers were like we went into the classroom and delivered the lesson. So in online classroom, it is very necessary. I know it's over for us, but here in Pakistan as well, some teachers are teaching online. There are many platforms that are emerging, and there are many virtual schools that are emerging, and even in abroad as well. And then I have heard about students who are living abroad, and they have Pakistani teachers, and then there are some students who are residing in Pakistan, but they are learning from the educators who are abroad. So online teaching is still there. We are also doing this camp as an online thing. And so daily check-ins using emojis or any short surveys or collaborative digital projects or any modeling, any emotional expression in video calls. All these can make online learning more human. All right, now coming to practical strategies for integrating SEL. As I said, that you can use these daily check-ins, in your classroom in order to know about the emotional state of your child. You can use the first 5 minutes to gauge the student's emotional states. First 5 minutes, you can integrate your lesson. You can model your emotions. Now, teachers can also demonstrate healthy ways to manage emotions. They can share about their own stories and what they are going through. This way, the students will be able to share their stories with the teacher. They will be comfortable that yes, our teacher has, she is also going through a lot of things,
and I can share with her. Maybe I'll be better. She became better after sharing with us, so I can be better while after sharing with her classmates or the teacher. So it gives a sense of understanding and cooperation and collaboration between teacher and a student. Now, measuring the impact of SEL. So, if you are a teacher and you are modeling SEL, you are implementing SEL in your classroom, you can use any pre and post surveys for SEL skill changes. You can do this at the start of the year and do a post survey after filling, after implementing the strategy, and you can maybe give points to the students and see the behavior changes in the students. You can gather the feedback by other students, by the teachers and parents, and you can gather that data and measure the impact of SEL. You can also check the impact of SEL by reviewing the academic by analyzing grades in the test. So in this way, you will be able to know that SEL is working for your class. Now, other than implementing SEL in the classroom, it is also very important for the teachers to recognize their own emotional needs. They should also practice mindfulness and boundaries. You have to set your boundaries in order to have to learn to say no to the overload of work that's coming your way. Sometimes some teachers are very generous to do the task of other teachers as well. So you need to set boundaries here. You learn how to say no. And in order to feel relaxed, you can use gratitude journaling. You can use it as a reflection. You can use it as a peer reflection. You can, practice mindfulness, meditation. You can cut yourself off from work. So as some of the students have asked me, and I actually do Twitter retreat because, as I said earlier, that I am my master's was the people teachers, the burnout, and the work alienation, burnout, and the stress that's related to the teacher leaders. So I did a whole study on this, and my goal is to have some kind of retreat for the teachers in order to work on their well-being. So I, as part of the wellness department at my school, I planned a retreat at the end of the term, and I was actually approached by another school to pay for them, and I actually planned and scheduled the whole entire brought the retreat model for them as well. So this I make sure that the teachers should have some time out, and there should be some kind of a time that when teachers are not doing any work and they should focus on their own well-being. Remember that almost everything will work again if you unplug it for a few minutes. So you can't score from an empty cup. Simple practices like self-setting boundaries, journaling gratitude for things that I've mentioned the previous slide. So if you take care of yourself, you are going to model this for your students. So you have to. I really like this quote that almost everything will work again if you unplug it for a few minutes during you. So you have to unplug yourself for a few minutes so that you can recharge yourself and do the next thing again. So in order to have this self-care, you need first identify your emotions, your burnout, if you're overworked, you're exhausted. So you need to identify the emotions, what stage are you feeling right now. Then you have to manage your emotion, and in this way, you're socially aware, you will make responsible decisions, and then you will do the rest of the things, the rest of the work yourself. This is again a tip for a teacher. If you feel burnout setting in, feeling demotivated and exhausted, it's best to
sake of everyone, to withdraw and restore yourself. So I think summer is the best time for you to rejuvenate and feel yourself relaxed. Okay, now moving towards the conclusion. So SEL is essential because it's a vital component of effective teaching, and it leads to better academic climate and student success. So as it is related to the better academic climate and student success, also deals with the success of teachers and maintaining their emotional state as well. Prioritizing SEL creates inclusive learning spaces for everyone. So think about, as a wrap up, think about any one strategy that you are going to implement tomorrow. So I would like to see in the comment box when this video will be uploaded that one strategy, SEL strategy that you will implement tomorrow is, and what is the one insight that you are taking away from this session. So I would like to have your feedback related to it, and I would like to see that what SEL strategy that you are taking away from here. So that's all from here. Thank you for watching, and I would like to receive your feedback related to my session. And here I would like to wish luck all the participants of this camp. And I would like to congratulate the Chakri Mudassir on the launch of the camp yesterday. And I'm also excited for the teachers conference that is happening in October. And inshallah, I'll also be a part of it. And wish you all best of luck and congratulations to the winners. Advanced congratulations to winners for the session. Wish you best of luck and Allah Hafiz. Yes, I hope so. It was a very good session that has given us so many strategies, practical strategies that can be implemented in the daily classroom settings, and the teachers can get a maximum benefit out of it. So I'm very much hopeful, and already we have done thanks to Farheen. And one more time, I'm saying thank you so much, Farheen, for this wonderful session that you have sent in a recorded form. You are here. Areva, Farheen is also here. Farheen, welcome in the session, and would you like to share something here? It was an amazing session. I would Even like to enjoying ask a the lot. participants. Yes, Can you hear me? yeah. Yes. Okay. So I would like to ask if there are any questions that participants want to ask. I'm here to answer any questions. And as I said earlier in my presentation, that I would like to see that what is one strategy or one key takeaway that you would like to take from this session. I would like to see in the chat box. Yes, Thank you, Varda. Huh. And the feedback form link is already given, so kindly please fill that form. It's a very simple few lines form. You are most welcome to give the feedback of Ms. Farheen's session. And in the meantime, you are writing in the chat box. I would like to introduce one of our new member as a co-host of mine for today's further sessions. So I would like to introduce Valiha. Yes, Valiha, I request you to kindly please open your video. So that, yes, welcome Valiha. And she is a young, new, fresh blood, joined platform of Nurul Huda. And now today she is the co-host, and further session she will be leading. So over to you, Valiha. In the meantime, let the chat box completed the feedback of Farheen. And after that, you are most welcome to proceed for the next of our guest speaker. And I'm really thankful for Valiha for joining us, and Farheen, I'm really thankful that even after sending you your video, a very wonderful video, you are here. Thank you so much in advance to Arif Sahab as well. Arif Sahab has also joined. So Valiha, now you are most welcome to take a lead. Thank you. Valiha, kindly unmute yourself first. Oh, I thought I have been speaking. Okay, fair. Okay. Hi, everyone. I'm Valiha, one of the co-hosts for today, for day 2 of our International Teachers and Leadership Camp. I hope you all enjoyed Ms. Kareem's session, and if you have any comments, just
leave them in the comment section here, or you can fill out the form that will be sent to all of you. In fact, it is already sent to all of you. Well, without further ado, it's truly a pleasure to enlighten this session by including a fantastic speaker we have with us today for IBTLC 2025, Mr. Areeb Minhaj. He brings an incredible wealth of experience with over 15 years in the professional world and almost a decade dedicated to being a dynamic speaker, trainer, and career counselor. He's a true expert in the EdTech space, incredibly passionate about soft skills, and precise at guiding careers. So you all are in good hands. You'll hear about his impressive background in electronics engineering, his diplomas in education and leadership, and even that he's currently pursuing 2 master's degrees now. How impressive is that? What truly stands out about him is his commitment to equipping both learners and educators with the essential skills needed for a fast-changing world. We're excited to have him share his insights with us. So please join me in giving him a warm virtual welcome to him. Over to you now, Mr. Areeb. Please. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much, Valiha. Thank you so much, Ms. Farheen, for giving me opportunity to speak to the teachers and other educators. So I just quickly अपनी screen share कर देता हूँ. Is my screen visible to you? Yes, it is visible. Okay, so today we are okay. So today we are going to talk about the role of teachers as mentors. थोड़ा सा अपना introduction दे देता हूँ that मेरा जो because I have been in coding and programming since 2015. Okay, so I have been in the field of science and technology since 2015 when I passed from my undergrad degree of electronics engineering. So my passion was always linked with the teaching, with the education, with the counseling, with like healing minds, creating ideas. So I was like always wondering, is there any possibility to bridge these two different fields? But after COVID, I realized that there are things happening already in the EdTech field. So EdTech wasn't new for me in COVID, so I started teaching online to the students from various ethnicities, various language, various nationalities. So I noticed that there is a gap of mentorship. There's a gap of counseling. Most of our decisions are based on influence biases that we are taking from our seniors. भाई बड़े भाई ने कर लिया, किसी को सक्सेसफुल देख लिया तो हमने भी वही करना है. हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बायस रख लेते हैं. तो मैंने बोला मैंने इसी को टच करना है. और मैं आजकल एक टूल पे काम कर रहा हूँ कि एक ऐसा पोर्टल हो जिसमें तमाम मैं अपने इंटरेस्ट डालूं एंड देन मेरे इंटरेस्ट और पैशन से मुझे वो करियर अलाइन करके दे, मुझे यूनिवर्सिटी तक बताए, मुझे रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए होंगे ये तक बताए, और इसमें कितने खर्चे आएंगे ये तक बताए. तो ये सारी चीज़ों में मुझे वो गाइड करेगा पोर्टल. अच्छा, आज हम जो कंटेंट कवर करने वाले हैं, the first content that we are going to cover is introduction, then what is the importance of mentorship, and then what qualities should a mentor must have. And then in the second part, we will talk about what are SMART goals, like how can we SMART goals for our students. एक बच्चा मेरे पास आ रहा है and then he or she is asking के sir ma'am I need mentorship, I need guidance. So what is a smart way to set goal for them, to guide them? So we'll talk about that and then we will conclude with the reflection. So Isaac Newton said, if I have seen further, it is by standing. किसी भी हमें दूर तक देखने के लिए किसी ऊंची जगह पे खड़ा होना बहुत जरूरी होता है. तो मेरा विजन बहुत कम होगा अगर मैं एक्सपीरियंस कम रखता हूँ. बट अगर मैं किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ खड़ा हो जाऊंगा, उसके कंधे पे खड़ा हो जाऊंगा, तो आई कैन हैव अ फोरसाइट विजन. मैं दूर तक देख सकूंगा.
सही है। तो अब यही रोल है मेंटोरशिप का, कि किसी तरीके से हम अपने जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे जो हैं छोटे भाई बहन हैं, उनको हम किसी तरीके से गाइड कर सकें टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द फ्यूचर दैट वी हैवंट सीन येट। वो फ्यूचर जो हमने भी नहीं देखा, हम उनको बता दें कि भाई क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से अलाइनमेंट करनी है। तो अब कैसे हो सकता है ये? अगर हमारे पास ये विजडम हो, हमारे पास ये टूल्स मौजूद। अक्सर टीचर्स सोच रहे होते हैं कि यार हमारे अंदर एबिलिटीज नहीं है, हमने तो कभी मेंटोरशिप की नहीं, हम तो नहीं जानते कैसे होता है, हमारे पास टीचिंग का टाइम नहीं मिलता, आप बात कर रहे हैं मेंटोरशिप की। क्या ये बात सच है? मालूम करते हैं। अक्सर औकात जब मैं टीचिंग कर रहे होते हैं, हम अक्सर औकात एक बच्चा आता है, बोलता है सर मैं समझ नहीं आ रहा, मैं कौन सी सब्जेक्ट चूज करूं। जो लोग मिडलर्स को पढ़ा रहे होते हैं उनको बहुत ये फेस करनी पड़ती है चीजें, कि वो 9 में फैसला करना चाह रहे होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। कुछ स्कूल्स में तो ये तक फैसला करना होता है कि कौन सा बोर्ड लें, आखान बोर्ड, कराची बोर्ड, कैम्ब्रिज, जियाउद्दीन, देयर आर सेवरल बोर्ड्स आउट देयर। तो वो गोल सेट करना चाह रहे होते हैं, सर मैं क्या पढूं, सर मैं क्यों पढूं, ये सब चीजें होती हैं। बच्चे पूछ रहे होते हैं अपनी क्वेरीज। फिर बच्चे आपसे आके बात करना चाह रहे होते हैं, सर हमने ये ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आप उसमें गाइड करते हैं। आप मुझे ये सारी जो लिस्ट है, थोड़ा सा इसको एनालाइज करें और मुझे बताएं कौन है जो इसमें से एक भी नहीं करता। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कि मैं एक भी चीज नहीं की मैंने, इन 25 आइटम्स में से मैंने एक भी चीज जिंदगी में कभी नहीं की। इज देयर एनीवन हु कैन से दैट? कोई है जो ये कह सकता है कि नहीं की, या कोई एक बात कोई इसको एंडोर्स करे कि हाँ हमने की है? आई एम वेटिंग फॉर द फीडबैक। कोई इस पे मुझे थोड़ा सा बता सकता है कि जस्ट चैट बॉक्स में बता दे कि हाँ हमने की है या नहीं की है, ताकि हम इस पे आगे चलें। यस, हम अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में कर रहे होते हैं। तो ये होती है मेंटोरशिप की छोटे छोटे साइंस, जो हम अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं, बट हम उसको नोटिस नहीं कर रहे होते, हम उसको इंटेंशनली नहीं कर रहे होते। हम बोलते हैं बस हो गई, और हमें नहीं पता कि वो चीज आगे जाके कितनी सिग्निफिकेंट होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपके पास 7 में एक बच्चा होगा, 6 में एक बच्चा होगा, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं और आपने उसको एक ऐसी एक्टिविटी के थ्रू मैथ पढ़ा ली कि उसको जिंदगी भर मैथ से मोहब्बत हो, या साइंस आपने ऐसे पढ़ा दी कि उसको जिंदगी भर मैथ्स साइंस से मोहब्बत हो गई, या हिस्ट्री ऐसे पढ़ा दी मोहब्बत हो गई। और उसका उलट भी हो सकता है कि आपने वो सब्जेक्ट नाइटमेयर बना दिया उसके लिए। ठीक है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो मेंटोरशिप इस तरह से भी होती है कि आप वो ऑप्शन इंट्रोड्यूस करा देते हैं उसके लिए, और फिर वो सिग्निफिकेंस आपको अभी नहीं दिखती। वो 5 साल बाद, 6 साल बाद जो बच्चा किसी शेप में आ जाता है, वो यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है, वो कॉलेज में पहुंच जाता है, तो उससे फिर आपको रियलाइज होता है कि यार मैंने अक्सर औकात हम जब अपने पुराने स्टूडेंट से मिलते हैं तो हम पूछते हैं क्या कर रहे हो आजकल। तो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि सर टीचिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है सुन के कि सर हमने भी आपकी तरह सर केमिस्ट्री में ही रिलेटेड फील्ड उठाई, केमिकल इंजीनियर बन गया हूँ। तो कितना अच्छा लगता है सोच के कि एक बच्चे को मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया जिससे वो इंस्पिरेशन लेके उसने उसी का प्रोफेशन चुन लिया। तो ये भी एक मेंटोरशिप की फॉर्म है। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। आप लोगों के टेक अवेज क्या है, इसको जरूर लिखिएगा। मेरा टेक अवे क्या था कि हम सारी जिंदगी मेंटोरशिप करते हुए आए हैं, बट उसको एक्नॉलेज नहीं करते। और जब हम एक्नॉलेज नहीं करते ना, तो हम फिर जो है इंटेंशनल एफर्ट्स नहीं कर पाते कि हाँ हम उसको सही तरीके से कर रहे हैं, कि हमारी कोई चीज गलत ना हो जाए, कोई मिसगाइडेंस ना हो जाए, कोई चीज ऐसी ना बता दें जो कि फॉल्सिफाइड इंफॉर्मेशन है, या अब वो वैलिडेटेड नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब हम इंटेंशनली चीजों को कर रहे होते हैं, तो फिर हम ऐसी जो है ना लेबलिंग नहीं करते। कि लाइक फॉर एग्जाम्पल एक आर्ट का स्टूडेंट है, ये बहुत कॉमन रहता है
एक बच्चा है जो कि आर्ट में पैशन रखता है और हम उसे बोलते हैं यार आर्ट में क्या रखा है। अगर आपको नहीं पता कि आर्ट में क्या रखा है तो आपको नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहली चीज ये कि अगर आप इंटेंशनली चीजों को कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हाउ मच सेंसिटिव मेंटोरशिप इज। तो आज का जो मेरा एजेंडा था वो यही है बात करने का कि हम इंटेंशनल एफर्ट्स करें। और ये चीजें सिर्फ हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं होती, ये हमारे घरों में भी होती हैं। हम किस तरह से बात कर रहे हैं। मेंटोरशिप के 3 एरियाज होते हैं, ट्रेनिंग, कोचिंग, सपोर्ट। अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग की, सो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग आर द स्ट्रक्चर्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस। यानी कि मैंने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया कि इतने घंटे का, इतने मिनट का, इतने एसएलओस के साथ एक लर्निंग आउटकम प्रॉपरली, उसका एक स्पेसिफिक स्किल सेट डिलीवर करने का सोचा है हमने। एक प्रॉपर करिकुलम है इसमें मेजरेबल आउटकम्स है कि भाई 5 का मतलब ये है, 4 का मतलब ये है, 3 का मतलब ये है। तो इसको 5 मार्क्स उस वक्त मिलेंगे जब ये सब कुछ कर सकता होगा। एक रूब्रिक बना के दे, इससे मैं कहूंगा मेजरेबल आउटकम। तो ये होती है प्रॉपर ट्रेनिंग्स आप लोगों की जो यूनिवर्सिटीज में होती हैं, घरों पे होती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज के फॉर्म में आप अटेंड कर रहे होते हैं। तो ये होती है प्रॉपर ट्रेनिंग जो कि स्ट्रक्चर्ड वे में रन की जाती है। कोचिंग, कोचिंग सिंपली सी मैं अगर बात करूं तो भाई मैं फिटनेस कोचिंग की मिसाल लूंगा कि भाई मेरा गोल है, मैं अभी 90 केजी वेट रखता हूँ और मेरा गोल है कि भाई मुझे कोई फिटनेस ट्रेनर गाइड करे कि मैं इसको बेहतर करूँ। मैं रिलेशनशिप की बात करता हूँ, मेरे मेरे रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, यानी कि स्पाउस के साथ और दीगर लोगों के साथ, और मैं चाह रहा हूँ उसको बेहतर करूँ। तो मुझे कोई रिलेशनशिप काउंसलर पर्सनलाइज प्लान देगा जो कि फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, मेरे हिसाब से होगा। इसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी और पर्सनल ग्रोथ इंपॉर्टेंट होगी। मतलब अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो हम इसको टाइमलाइन को खींच दें, ठीक है। एंड देन इसमें ऑन गोइंग सपोर्ट होती है। मतलब ये नहीं कि मैंने करिकुलम दे दिया एंड देन पढ़ के इम्तिहान दे दिया। इसमें ऑन गोइंग सपोर्ट होती है। आज समझ में नहीं आ रहा, दोबारा गए, तीसरी बार गए, चौथी बार गए, पांचवी बार गए। तो कोचिंग इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी के साथ एक प्रोग्राम चलता है और बहुत से लोग बहुत सी डिफरेंट कोचिंग्स ले रहे होते हैं। फिटनेस, रिलेशनशिप, ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो कि हमारे टाइम में हो रही है आजकल। अब बात करते हैं हम फर्दर सपोर्टिंग की। इस सपोर्ट क्या चीज है? सपोर्ट इज ऑल अबाउट लाइक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं किसी को फ्लेक्सिबल असिस्टेंस देना। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपनी टीचिंग कर रहा हूँ एंड देन मुझे एक कुछ चीज़ों में मैं सफर कर रहा हूँ। तो आई विल लाइक टेक हेल्प फ्रॉम अ सीनियर टीचर, that he or she will be supporting me कि अरीब इन चीजों को ऐसे कर लो। तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मुझे एक्सेसिस मिल रही होगी। और गेम इसमें एम ये होगा कि मैं जो अपने चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम कर सकूं किसी तरीके से। एंड देन वी विल टॉक अबाउट लाइक फोकस ऑन, इसमें मेनली फोकस क्या होता है? वेलबींग और प्रैक्टिकल हेल्प की ज्यादा जरूरत होती है ताकि थोड़े से वक्त के लिए मिल रहे होते हैं और प्रैक्टिकली बात हो रही है। इसमें डिपेंडेंसी नहीं चाहिए होती है। आपने फिश पकड़ना सिखाना है, फिश प्लेट में नहीं देनी है हर बार। एक बार आपने फिश पकड़ना सिखा दिया, नेक्स्ट टाइम वो फिश खुद भी पकड़ लेगा। तो सपोर्टिंग इज ऑल अबाउट दिस। अब हम क्विकली बात करेंगे मेंटोरशिप की इंपॉर्टेंस के हवाले से। लाइक डिफरेंट रिसर्च पेपर्स में क्या बात हुई है, मैं थोड़ी सी इसको उसके ऊपर मैंने कलेक्शन की थी कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है मेंटोरशिप की और क्या सिग्निफिकेंस चेंजेस आए हैं। क्विकली मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा। एक स्टूडेंट है मेरा जो कि उमरकोट से बिलोंग करता है और उमरकोट से वो 8वीं जमात पढ़ के आया था और एक स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हुआ। लैंग्वेज में सफर करता था, इंग्लिश लिख नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, बस रट के इम्तिहान देके स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हुआ और कराची में पढ़ने आ गया एक इदारे में जिसका नाम है एनजेवी कॉलेज स्कॉलरशिप। 9, 10, 11, 12 उसने पढ़ा। ही इज ब्रिलियंट। उसको प्रॉपर काउंसलिंग की गई, प्रॉपर मेंटोरशिप दी गई, लाइक डिफरेंट टीचर्स उसके डिफरेंट एरियाज में हेल्प करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज के दौर में लम्स में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है और बहुत अच्छे से पढ़ रहा है और 100% स्कॉलरशिप में है। तो
ये इम्पोर्टेंस होती है कि अगर आपने सही वक्त पे सही तरीके से बच्चे को टच कर लिया तो बच्चा वहां पहुंच जाता है जहां उसने भी नहीं सोचा होता, आपने भी नहीं सोचा होता। तो मैं कहूंगा कि एवरी सिंगल मोमेंट जो आप बच्चे के साथ स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत सिग्निफिकेंस रखता है, और हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं इन चीज़ों को। तो क्विकली मैम बात करते हैं कि भाई क्या चीज़ें हैं जिसको हम निग्लेक्ट करते हैं, एंड देन उसका इम्पोर्टेंस क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द इम्पोर्टेंस। अगर हमारी मेंटोरशिप जिन्हें मिल रही होती है बच्चों को, उनकी जो सोशल इंटरेक्शंस होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। ये देखा गया है कि जो के प्रॉपरली मेंटोरशिप में होते हैं वो दोस्त अच्छे बना रहे होते हैं, उनको पता होता है बात कैसे करनी है। इम्प्रूव्ड एंगेजमेंट्स, ये भी देखा गया है कि अक्सर औकात अगर एक बच्चा मेंटोरशिप में होता है तो उसके जो वक्त होते हैं वो सही तरीके से टाइम स्पेंड कर रहा होता है, वो इधर उधर टाइम जाया नहीं कर रहा होता। उसे पता होता है 24 घंटे को किस तरह से इस्तेमाल करना है, घड़ी का किस सही इस्तेमाल क्या है, किस वक्त सोना है, किस वक्त जागना है, किस वक्त खेलना है, किस वक्त किसको कितना टाइम देना है। देन देखा ये गया है कि अगर प्रॉपरली आप जब गोल सेट हो जाते हैं तो बच्चे को पता होता है कि मैंने कितने ग्रेड्स लेने हैं, और क्योंकि उसको आपको गोल पता है कि भाई मैंने अगर एमबीबीएस करना है तो उसके लिए गोल ये है। अगर उसको नहीं पता होगा उसे एमबीबीएस करना है, उसको नहीं मिल रही होगी मेंटोरशिप, उसको नहीं इनफ नॉलेज मिल रही होगी, तो फिर वो ग्रेड्स के लिए एफर्ट भी नहीं कर रहे होंगे। अक्सर औकात ये देखा गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब आपको कोई सुनने के लिए मिल जाता है तो आपकी सेल्फ स्टीम खुद ब खुद बेहतर हो रही होती है। बहुत बेसिक नीड है इंसान की, जो कि आज के दौर में हम मिस कर रहे हैं, कि हमें सुनने वाला चाहिए, येट हम ना हमें सुनने वाला मिल पा रहा है, क्योंकि जो सुनने वाला है वो भी कहीं मसरूफ है स्क्रीन के साथ, और हम भी स्क्रीन के साथ बिजी हैं। तो ये मेंटोरशिप का पहले क्या होता था, हम थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। कि पहले हमारे पास जो दादियां थी, नानियां थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। आज वो नहीं है। आज हम जो है ना आइसलोस में रह रहे हैं, अपने छोटे छोटे आइलैंड्स बना के रह रहे हैं अपने, और जिसकी वजह से हमें वो कहानियां सुनाने वाले लोग नहीं मिल पा रहे। तो जो गैप है ना वो खिला बढ़ता जा रहा है, वो वैक्यूम बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी अक्सर देखा गया है कि हमारी यंगस्टर्स की सेल्फ स्टीम काफी ज्यादा डाउन होती जा रही है। अ, मेरी आवाज क्लियर है? Yes. ओके। तो सेल्फ स्टीम डाउन होती जा रही होती है, और जब उसको सुनना स्टार्ट करते हैं बच्चों को हम, तो फिर खुद ब खुद चीजें बेहतर हो रही होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, सिंपल सी बात है, अगर मैं अपने 10 साल सीनियर बंदे से बात कर रहा हूँ और उसको सुन रहा हूँ और मुझे पता है कि मैंने उससे कैसे बात करना है, तो पहले से मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ अपनी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। और अक्सर औकात ये हमारे अभी रिसेंटली ये देखा गया है कि हमारे अम्मी अब्बू जो हैं, हमें सीनियर्स जो हैं, हमें बहुत सी जगहों पे नहीं लेके जा रहे थे। नहीं नहीं लड़ेगा, नहीं 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 नहीं, हम मैनर्स नहीं सीख पाए, बच्चा बड़ा हो गया। हम बोलते हैं भाई बच्चा बोल नहीं पाता लोगों के सामने, नो पब्लिक डीलिंग नहीं आती। अरे भाई हमने उसको एक्सपोज ही नहीं किया इन चीजों के लिए, हमने पैम्पर्ड करके रखा। और अभी हम वही कर रहे हैं अगली जनरेशन के साथ, कि हम बहुत ज्यादा पैम्पर्ड कर रहे हैं अपने यंगस्टर्स को, उनको उन टफ एडवर्स सिचुएशंस में डाल ही नहीं रहे। हम उनको बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं उनका, इतनी एक्स्ट्रा पैम्परिंग भी जरूरत नहीं है। उनको मुश्किलात में डालेंगे तो उनकी जो है सॉफ्ट स्किल्स बेहतर होंगी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, उनकी टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगी। एंड देन जब आपके गोल सेट होते हैं तो फिर आपके भटकने के चांसेस खुद ब खुद कम हो जाते हैं। आपको पता होता है कि किस तरह से मैंने क्या नहीं करना, क्या करना है, डूज एंड डोंट्स आपके क्लियर होते हैं। और उनको पता होता है कि मैंने भाई 2005 साल में ये काम करना है। जब ये पता होगा तो फिर इंसान भटकेगा नहीं। कुछ और इम्पोर्टेंस, इमोशनल रेजिलियंस। अगर मैं किसी मेंटोर की फेलियर की स्टोरी सुनूंगा तो फिर मुझे पता होगा कि भाई सिर्फ मेरी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ मेरी लाइफ एडवर्स नहीं है, देयर आर लॉट
of suffering there in other lives as well, तो भाई empathy create होगी दूसरों के लिए भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। करियर एक्सप्लोरेशन, जाहिर सी बात है, अगर मैं लेट से किसी सीनियर के साथ बैठ रहा हूँ, उसको सुन रहा हूँ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सुना मैंने, उसने मुझे बताया कि भाई मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, और फिर मैं अपने आप को उस हिसाब से तैयार करूंगा। वो अगर 5 साल में तैयार हुआ है, ओके ठीक है, अगले टर्म में क्या हो रहा है, ओके अगले टर्म में ये चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो विजडम जो मैं, वो कहते हैं ना कि दे आर टू वेज, या तो हम उनकी गलती से सीख लें, किसी और की गलती से सीख लें, या वही गलती खुद करें। अगर हम वही गलती खुद करना चाह रहे हैं, तो विजडम ये हमें अलाउ नहीं करता। हमें विजडम ये कहता है कि भाई उसने गलती कर दी, उसकी गलती से लर्न करो एंड हैव सम मोर मिस्टेक्स, जिससे कोई और सीखे। अगर वही गलती रिपीट की तो इंसानियत का आपने फायदा नहीं उठाया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। देन नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, जब भी हम मेंटोरशिप में जाते हैं तो हमें नेटवर्क्स बिल्ड होते हैं हमारे, और आज का जो दौर है, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आप कितने लोगों को जानते हैं, कितने लोगों को कैश कर पा रहे हैं, यही आपकी सक्सेस की चाबी है। फ्यूचर प्लान्स, अगेन आपके हायर एजुकेशन के प्लान्स क्लियर होते हैं, आपकी जॉब्स की प्लान सिक्योर हो जाते हैं। आप जब लिंक्डइन के दौर में जी रहे हैं, और आपको अगर प्रॉपरली एक मेंटोर मिल जाता है लिंक्डइन पे, जो कि आपके मसले सुन रहा है, तो आप पास आउट होने से पहले, आपके स्टूडेंट के पास आउट होने से पहले उस स्टूडेंट के लिए जॉब सिक्योरिटी कंफर्म हो जाती है। वो ट्रस्ट करता है मेंटोर कि हाँ मैं इसको रेफर करूंगा, मैं इसको गाइड किया हूँ। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सिंपल सी बात है। अगर आप खुद देखते हैं मेंटोर्स को, क्या मेरा मेंटोर अभी भी पढ़ रहा है, हमारे पास मेरे अपने मेंटोर्स हैं जो कि पोस्ट जॉब कर रहे हैं, तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर एक बंदा 60s 70s में भी खुद से सीख रहा है, भले डिग्री ना ले रहा हो, खुद से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, खुद से स्टडी कर रहे हैं, अपनी लाइब्रेरी है, तो फिर हमें भी एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक रोल मॉडल मिलता है टू स्टडी। एक एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा सा इमेजिन करें अपने आप को कि आप 11th ग्रेड में, कोई किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है, अपनी अपनी दोबारा पास में चले गए, जिस पास में आप थे, ठीक है। आप क्या सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में अगर कोई मेंटोर होता तो क्या होता? पहले तो ये बताएं कि क्या आपको मेंटोर की जरूरत थी उस वक्त। थोड़ा सा मुझे गाइड करें कि आप अपना फीडबैक दें ग्रुप में कि क्या आपको उस वक्त मेंटोर की जरूरत थी, अगर हम अपने दोबारा कॉलेज लाइफ में जाएं, या बिल्कुल जरूरत थी। तो अब हम थोड़ा सा ये सोचेंगे कि उस मेंटोर में हम क्या देखते थे, क्या एबिलिटीज होनी चाहिए थी उसमें। थोड़ा सा कोई मुझे चैट में बताया कि क्या, एक एक तो मैं इनपुट्स देना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं कि उसके अंदर क्या एबिलिटीज होनी चाहिए थी उस मेंटोर के अंदर, जो कि आपको 11th ग्रेड पे टच करता, क्या करती? इधर उसके अंदर लिसनिंग होनी चाहिए थी, या वो हैंडसम होना चाहिए था, या वो रिच होना चाहिए था, आपके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स सी हम क्या सोचते हैं। गुड लिसनर, सही। सेटिस्फैक्टरी आंसर्स ऑफ माय क्वेरीज, बिल्कुल मुतमईन, हैंडसम हो, के अपनी अपनी प्रायोरिटीज। स्पेशली जब हम टीन में होते हैं तो हमारा गोल तो यही होता है कि कोई हैंडसम अट्रैक्टिव जो है हमें मेंटोर मिले, जिसके साथ हम बैठ के टाइम स्पेंड कर सकें। अब हम बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ मेंटोर्स। सबसे पहली चीज, बिल्कुल एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या चीज है? बड़ी मजे की बात है। दो चीज तरह की सुननी होती है, सुनने की सलाहियत होती है। वन इज listening for the sake of answering, and the other thing is listening ये सोचने के लिए कि यार मैं जवाब तैयार कर दूं, जैसे ही वो अपनी बात मुकम्मल करे मैं पलट के कुछ मार दूं। मैं सुनने की नीयत से ना सुन, इंटेंशन मैटर्स अ लॉट। एक्टिव लिसनिंग में होता है कि मैं
उसको सिर्फ सुनो विद प्रॉपर अटेंशन, उसको फील हो, एक एम्पैथी फील हो उससे, इस नीयत से मैं सुनूं उसे। देन द सेकंड थिंग इज पेशेंस। मैं अपने पेस पे ना सुनूं उसे, मैं उसके पेस पे जाऊं, मेंटी के पेस पे जाऊं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देन एम्पैथी। एम्पैथी बहुत बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। ये कहते हैं कि भाई दूसरे के शूज में जाके, मेरे लिए बहुत आसान है ये कहना कि भाई मैथ तो सबको आनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों के रात के डरावने ख्वाब होते हैं, नाइटमेयर्स होते हैं, उनको मैथ नहीं आती। लेकिन अगर मैं एम्पैथी लाऊंगा तो मुझे पता चलेगा भाई ये हर किसी को मैथ अच्छी नहीं लगती, फॉर वेरियस रीजंस। तो फिर जब मैं एम्पैथी नहीं लाऊंगा, मैं एपैथी लाऊंगा, तो फिर मैं मेंटोरशिप नहीं कर पाऊंगा, मैं जस्टिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा। और अक्सर औकात ये होता है, हम आर्ट के स्टूडेंट्स को बोल देते हैं कि भाई आर्ट में रखा क्या है। अरे भाई उसकी जिंदगी है, उसके लिए आर्ट उतना ही है जितना मैथ्स वाले के लिए नंबर्स। उनको, आपको नंबर से मजा आ रहा है, उसको आर्ट से मजा आ रहा है। तो अगर एक मैथ का टीचर ये सोच ले कि नहीं यार, प्री इंजीनियरिंग जस्टिफिकेशन नहीं है, आप एम्पैथी नहीं क्रिएट कर पा रहे बच्चे के लिए। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, आप जो बता रहे हैं प्रॉपर रिसर्च के साथ बताएं। आपको नहीं पता, आप बच्चे को ऑनेस्टी के साथ बोल दें कि बेटा मुझे फिलहाल नहीं पता, लेट मी गूगल इट। अक्सर औकात हम माजरत के साथ, सीनियर लोग हैं इस ग्रुप में, बट मैंने देखा है कि हम ऐसे ब्लंडर मार रहे होते हैं टीचर्स कि हमें नहीं पता होता और हम बोल देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा ही है, विदाउट चेकिंग ऑन वेब। अब मैं अगर मिसाल दे दूं तो स्कॉलरशिप क्राइटेरियाज, यूनिवर्सिटी के एडमिशन की क्राइटेरियाज आपने पढ़ा था अपने इंटर के वक्त में, और आपने वो अप्लाई कर दिया 10 साल बाद कि नहीं यार ऐसे ही होता होगा। और फिर बच्चे को आप मिसगाइड करते हैं, और बच्चा वही चीज लेके चलता है, और फिर बाद में बच्चे को बदलता है, और बच्चा फिर आपको कोसता रहेगा। नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। आप उसी वक्त में आप एक चीज की नॉलेज ले लें और उसी से रिलेटेड गाइड करें, हर चीज से रिलेटेड गाइड ना करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, तो उस चीज के बारे में आप नॉलेज इकट्ठा कर लें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी को कुकिंग अच्छी लगती है तो वो कुकिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लें, और फिर आप बोले कि मैं इस चीज के बारे में जो गाइडेंस लेनी है मुझसे ले। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एम्पैथी लाए हैं हम, तो उसके साथ हम फ्लेक्सिबिलिटी होके चलें। अच्छा आज बच्चा अवेलेबल नहीं, कोई बात नहीं, कल कल बैठ जाते हैं, परसों बैठ जाते हैं। गोल, अगर बच्चा टास्क नहीं कर पा रहा, मेंटोरशिप में बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है, आप टास्क दें उसको कि ये कर लो, पूरा बच्चा कुछ रिसर्च नहीं करके लाया है, तो फिर आप अब बच्चे के साथ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखें। मोटिवेशन होनी चाहिए, आपका जो ऑरा है वो बच्चे को, वो हमें ग्रुप में भी किसी चैट में किसी ने कहा हैंडसम, हैंडसम होना भी एक मोटिवेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। बहुत से, मुझे अपनी फिजिक्स की टीचर जो थी ग्रेड 8 में, मुझे नाम तक याद है, मिस सना, मुझे उन पर क्रश था, और उनकी क्लास में मैं बैठता था और इंटरेस्ट से सुनता था। बच्चों को फिजिक्स उस वक्त अच्छी, 9 में फिजिक्स अच्छी नहीं लगती थी, बट मुझे 9 में फिजिक्स और चीज होती है मोटिवेशन। आप मोटिवेशन क्रिएट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, आप उसको वही किताबी बातें कर रहे हैं, तो वो बोर होगा आपसे। कमिटमेंट, आपने टाइम कमिट किया है, आपने जिम्मेदारी ली है, तो आप उसको पूरी करें। नहीं कर पा रहे आप उसे बता दें, लटकाना नहीं होता मेंटोरशिप में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस, इंप्रेसिव पर्सनैलिटी इज ऑल्सो द की ऑफ मेंटोरशिप, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो बच्चा आपसे उसी वक्त सुनेगा जब आपसे इम्प्रेस हो पा रहा होगा, वरना वो सुन ही नहीं पाएगा। अच्छा जी, अब हम मेंटोरशिप करनी भी जरूरी है, क्यों करनी जरूरी है, सारी बातें कर ली, अब कैसे कर। हाँ,
वाई बहुत जरूरी था मेरा, तो इसलिए मैंने अच्छा खासा टाइम लगा दिया इस पे। अब हाउ जो है ना मेरा बहुत छोटा सा स्मार्ट को, एस फॉर स्पेसिफिक, क्लियर टारगेट होना चाहिए बच्चे के लिए, बच्चे के जहन में कि भाई करना क्या है जिंदगी के, क्या सोचा है, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ व्हेन। वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी को मेंटोरशिप में, मैं बड़ी टिप देता हूँ ये बात, कि भाई जिंदगी में जानना है कि क्या करना चाहते हो तो अपने आप को डेड बेड पे देखो और ये सोचो कि आप मर चुके हो और लोग आपके बारे में क्या अच्छी बातें कि आप क्या करते थे, और वो चीज जो आप सोचते हो, वहीं से रिवर्स किया करो और स्पेसिफिक रहो। डॉक्टर बनना है तो कौन सा डॉक्टर, इंजीनियर बनना है तो कौन सा इंजीनियर, कहाँ का इंजीनियर, क्लैरिटी लाए अपने इसमें। देन मेजरेबल गोल्स जो है वो क्वांटिफाइड होने चाहिए नंबर्स से। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक रिसर्चर बनना है तो आपने एक साल में कितने पब्लिकेशंस करने का सोचा है, ने पर्सनल गोल रखा है कि भाई मैंने इतनी वेल्थ जमा करनी है, कितनी वेल्थ जमा करनी है, अमीर होना है, ये नहीं है इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है कि आपने जो वेल्थ सोची उस वेल्थ का क्वांटिफाइड गोल क्या है और उसको इन्फ्लेशन के साथ अटैच कर, अटेनेबल होना चाहिए। बड़ी मजे की चीज है ये। एक होता है या तो मैं बहुत इजी गोल बना लूं या बहुत अनरियलिस्टिक गोल बना, तो अक्लमंदी कहती है कि भाई मैं अटेनेबल बनाऊं पर उसको चैलेंजिंग रखूं ताकि मेरी तो ग्रोथ हो। तो आप जब अपने बच्चों को नहीं करेंगे तो आपने थोपना नहीं है। बीइंग अ टीचर, बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग एन एल्डर, आपने थोपना नहीं है, आपने उसको एक्सप्लोर करने में help करना, उसके पैशन को इन चीजों से लिंक कर। बड़ी कामयाबी होगी कि आप उसके पैशन को उसके प्रोफेशन से लिंक कर, तो फिर वो कमाते कमाते एंजॉय कर, रेलेवेंट, वो रेलेवेंट पैशंस के साथ जो मैंने बात की थी। और एक रेलेवेंट पर्पस होना चाहिए, भाई मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे शौक है इन चीजों का, क्यों, क्योंकि जरूरत है इस दुनिया को उस चीज से। और आप कन्विंस्ड होने चाहिए, आप मतलब स्टूडेंट कन्विंस होना चाहिए इस चीज का, आपका मेंटी कन्विंस होना चाहिए इस चीज का कि हाँ ये मेरा पर्पस है। ओन करे वो पर्पस, रेलेवेंस ओन करे, इसीलिए मैं कहता हूँ थोपना नहीं। एंड देन लास्ट हमारा जो पजल है, पजल का पीस है, वो है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड, आप जो भी इसको गोल दे, क्लियर होना चाहिए कि कितने सालों में अचीव होने, कितने दिनों में अचीव होने, कितने महीनों में अचीव होने। उसमें वेग इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास सारा और अहमद की केस स्टडी आ गई। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे और यहाँ पे हम इख्तिताम पजीर होंगे, हमारा सेशन आज का खत्म होगा। ये दो केस स्टडीज हैं, अहमद की और सारा की। अहमद 11th ग्रेड का स्टूडेंट है, कॉमर्स पढ़ रहा है, पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छा है, रिटन कम्युनिकेशन में भी अच्छा है, एंड ही लव टू कुक डिफरेंट कुजीन्स। वीकनेस क्या है, बेचारा मैथमेटिक्स में स्ट्रगल कर रहा है। एक ड्रीम है उसका टू जॉइन अ 7-star रेस्टोरेंट एज अ मास्टर शेफ। अच्छा, सॉरी उस क्लास में नहीं है, दूसरे सेक्शन में है, प्री इंजीनियरिंग पढ़ रही है, गुड इन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड अ क्रिएटिव माइंड, कोडिंग एंड इन्वेंटिंग न्यू आइडियाज की हॉबीज है उसकी, घर में कुछ चीजें ट्राई करते रहना। स्ट्रगलिंग कर रही है रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, बट ड्रीम है कि मिनिमाइज कर दिया जाए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जैसे वाटर है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, इसको। ठीक है जी। अब ये आपके स्टूडेंट्स हैं, अब ये
आपके स्टूडेंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने बारे में ना, अपने अपने स्टूडेंट्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन जान के कि भाई उसकी हॉबीज क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसका ड्रीम क्या है। सारा ले लें और मुझे थोड़े से आइडियाज दे कि अगर आपकी क्लास में अहमद होता, आपकी क्लास में सारा होती, तो आप क्या करते। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ टैबूज भी तोड़ने चाहे थे कि भाई जरूरी नहीं है कि मर्द है तो वो कुलिनरी आर्ट नहीं कर सकता, वो फाइन आर्ट्स नहीं कर सकता। जरूरी नहीं है कि लड़की है तो वो कोडिंग का या टेक्नोलॉजी का या इंजीनियरिंग का शौक पूरा नहीं कर सकती। तो दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम, ओके, सारा इज आल्सो अटेंडिंग द सेशन, दैट्स ग्रेट। अब हम बात करेंगे, अब आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम लगाएं और मुझे बताएं। ओके, सारा का गोल ये होना चाहिए कि अच्छा, ये तो आपने गोल सेट कर लिया कि भाई राइटिंग स्किल्स बेहतर होनी चाहिए। गोल काफी नहीं है, स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मिस रफिया, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। मिस सारा अपने हैंड रेस किया है। मिस्टर रफिया, I think it's by mistake, hand is raised, or if she would like to share, she can नहीं introduce. नहीं, इट्स ओके मेहर, एक्चुअली मैं आई वाज लॉग्ड आउट ऑफ द सेशन, सो आई एम नो मोर द होस्ट। तो होस्ट को फिर अनम्यूट करना पड़ेगा जिसने भी बोलना होगा, जो कि होस्ट या को होस्ट नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी अरीब, thank you so much for all the input. Before they actually go into the case study, I thought कि मैं अपने 2 cents दे दूं, if you allow me to. जी प्लीज प्लीज प्लीज। उसमें ये है, because I've been a guidance counselor since I started from the very first year, and I feel कि teachers role as a mentor is something very very important, और हर कोई हम में से ना उसमें fit in नहीं हो पाता। बिल्कुल। And we also need to understand, apart from this, that it is not necessary that all children will be affiliated with you. कोई अरीब को पसंद करेगा, कोई रफिया को पसंद करेगा, Exactly. कोई मेहर को पसंद करेगा। Depending on their personalities, children actually get drawn towards the mentors, या अपने उन teachers को mentor बनाते हैं जिनसे वो दिल से affiliation feel करते हैं। They feel a connection to the teacher. ठीक है, उसके बाद ये होता है कि अब वो टीचर की जिम्मेदारी है, एक बच्चा अगर उनके पास आ रहा है, so they need to understand that what is it that is connecting me to the child, या वो बच्चा मेरे पास क्यों आ रहा है, उसको क्या चीज जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, and how that child is looking for the support from me. ये हो गया। उसके बाद हमें हमारे अपने ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, ये भी एक नेचुरल टीचर्स का वो अफिलिएशंस में एक उनका जो है ये एस्पेक्ट है कि वी आर ड्रॉन टुवर्ड्स चिल्ड्रन हु आर लाइक अस। ये ब्लाइंड स्पॉट है हमारा एज टीचर्स, और हम इस चीज को बहुत, हाँ, जब मेरे जैसे एक्सपीरियंस लेवल पे आ जाते हैं, तब आपके आके समझने लगते हैं कि मुझे अपनी क्लास में वही बच्चा पसंद आता है जो बच्चा मेरे जैसा है, मेरे जैसे स्टाइल है उसका, या उसका वर्किंग स्टाइल इज लाइक मी। सो दिस इज अ ब्लाइंड स्पॉट फॉर मेनी टीचर्स। तो हम बहुत गलत फैसले करते हैं शुरू के सालों में जब हम नए नए टीचर बने होते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी सेंसिटिव, एंड टीचर्स नीड टू अंडरस्टैंड that when they are taking on the role of a counselor, a mentor, or they are guiding any student, they should be well aware of their own blind spots. And जैसा कि आपने बताया कि हर बच्चे के बारे में आपको भी ये सारी चीज मालूम होनी चाहिए, और इससे भी ज्यादा you need to observe the children in the playground, in the classroom, to be before you start your mentoring. सिर्फ ये नहीं कि आपको strengths weaknesses पता है, उस बच्चे में क्या जो है उसकी qualities हैं वो पता है, उसका nature पता है, you need to observe them also, and then be able to guide. Another thing is कि हम जो है क्या करते हैं कि खुद decisions लेना शुरू कर देते हैं। So when a child is coming to you for counseling or mentoring, you need to actually have a listening ear, be a good listener, listen to them, और उन्हीं से आंसर मांगे। What do you want to do? Where do you want to be? हम इसको कैसे कर सकते हैं? क्योंकि even for teachers, जैसे मैं teachers की भी mentoring young teachers की करती हूँ, so
I ask them कि उनका style क्या है? Will they be able to overcome their weaknesses by reading some material? Do they need one-on-one counseling session? Do they need to work with another peer to gain confidence? So हमें ये सारे aspect देख के फिर बच्चों को जो है deal करना चाहिए and अपने solutions उनको नहीं देने चाहिए. ऐसे ही So अच्छा ठीक है, thank you. जी जी जी, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन था और यही मैं आगे बात करने वाला था कि हम जब हर किसी की जिम्मेदारी ना, जिसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं सिर्फ उनकी जिम्मेदारी लें। बस कोशिश करें जिसकी जिम्मेदारी ली है ना उसको अच्छे से गाइड। और है कोई बच्चा आपको अप्रोच किया है तो अपने लिए अपने आप को ब्लेस्ड समझें कि उस बच्चे ने आपको तमाम टीचर्स में से प्रायोरिटी दी है। रखना है टीचर बतौर टीचर और फिर आपने प्रॉपर रिसर्च के साथ गाइड हेल्प करनी है। और बच्चे को टास्क दें ये तो तलाश करके लाओ, ये तो देखो कि इसका क्या है। आपने हिंट दे दी, बच्चा खुद करके देगा। और बच्चे को टफ टास्क दें तो बच्चा खुद से वो तैयार करके लाता है। हम क्या करते हैं, हम बच्चे को पैम्पर कर देते हैं, मेरा ये फेवरेट वर्ड। हम इतना पैम्पर कर देते हैं कि बच्चा मुश्किलात में पढ़ना ही छोड़ देता है, अडेप्टेबिलिटी छोड़ देता है। आप लोग इस पे अपने इस तरह से अपने प्लान्स बनाएं। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज क्या है, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल तो सेट कर ली, कहाँ जाना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट। स्मार्ट गोल तो सेट कर लिए बट स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी है। करना है फिर ये करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अहमद अहमद की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं बट ही इज नॉट गुड इन मैथ्स। उसको इतनी मैथ आनी चाहिए कि वो कॉस्टिंग पढ़ सके। क्यों? क्योंकि उसने रेस्टोरेंट में मास्टर शेफ बनना है। उसको ये पता होना चाहिए रेशो पोर्शंस क्या होते हैं, तो वो इतनी मैथ्स कर सके। तो स्ट्रेटजी में ये चीजें होनी चाहिए कि कैसे करना है, वहां तक कैसे पहुंचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम स्ट्रेटजी में गाइड नहीं कर पाते तो स्ट्रेटजी में जरूर गाइड करेंगे हम। एंड देन एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप सब अपना सॉरी आप सब अपने मोबाइल से ये क्यूआर कोड स्कैन करें और प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा लगा सेशन। अच्छा, मेन फीडबैक तो मुझे मिल जाएगा मिस राफिया ने जो लिंक शेयर करना है ग्रुप में, उससे मुझे फीडबैक मिल जाएगा ताकि मैं आपको आंसर दे दूं उसका। और कोई की टेक अवेज मुझे बता दें ग्रुप चैट में कि आपने आज क्या सीखा उससे। एनी की टेक अवे जो आपने, ये फीडबैक फॉर्म शेयर कर किया जा चुका है। इंटरेस्ट एक टेक अवे जो आपको लगता है कि आपकी टीचिंग में आपको लानी चाहिए। और एनी फीडबैक ऑन द सेशन मुझे बता दें कि किसी से मैं इसको मजीद बेहतर बना सकता हूँ। आई थिंक यस, बिल्कुल सॉट एनालिसिस। थैंक यू सो मच मिस कशफिया, बहुत वैल्यूड एडिशन था आपका ये कमेंट। बिल्कुल सही कहा आपने। Okay, Ms. Rafia, wait a while. Thank you so much, Areed Sahab. It was really a wonderful session, or I really appreciate के. Yes, Ms. Rafia, you are on mute now. जी आई जस्ट वांटेड टू ऐड के मेंटोरशिप पे जो है अभी रिसेंट एक रिसर्च पब्लिश हुई है जो मेरे नजर से गुजरी थी और उसमें ये बताया गया कि मेंटोरशिप इट्स नॉट फॉर स्टूडेंट्स को तो हम ज्यादा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का वर्ड यूज करते हैं। फॉर मेंटोरशिप ऑफ एडल्ट्स स्पेशली बड़े जो एडल्ट स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं जिनको हम मेंटोर करते हैं, तो उसमें कहा कि दिस मॉडल इज नो मोर वर्किंग विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी विद द चेंज इन अदर एस्पेक्ट्स। मेंटोरिंग अब उतना जो है बेनिफिशियल नहीं रहा है, रादर वी नीड टू हैव लर्निंग कम्युनिटीज। तो अरीब को सजेशन देना था, अरीब यू नीड टू प्लीज रीड ऑन दैट। और बच्चों का भी मैंने ये देखा है कि वो आजकल ना मशवरे नहीं मांगते,
वो आगे से बताते हैं कि दिस इज व्हाट वी हैव डिसाइडेड, और मेरे फला दोस्त ने ये बताया, फला ने ये बताया, जो OA लेवल, मेरे अपने बच्चे चूंकि इस एज ग्रुप में हैं तो मैं बहुत अच्छे से इस चीज को जानती हूँ कि दे सिट एंड डिस्कस। ये ना ऑनलाइन डिस्कशंस करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डिस्कशन करते हैं, तो इनका अपना जो ग्रुप सर्कल होता है ना बच्चे, ये अपने सारे डिसीजंस, मेजर दुनिया डिसीजंस। दुनिया जो है ना बहुत ज्यादा डाइवर्स है। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको कुछ भी नहीं पता, अभी भी बहुत सफरिंग में है। उनको पता ही नहीं टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। तो जी बिल्कुल दे बिल्कुल आर ऐसा ही है। स्टिल दे आर और यही, पीपल जो कि इनको जरूरत है मेंटोरशिप की। तो मैं जी जी उनके लिए बिल्कुल नहीं, जो बेसिक्स पे है ना अरीब, आई एग्री विद यू। और मैं तो इस चीज की बहुत ज्यादा जो है वो फेवर में हूँ, बिकॉज यू सी पहले क्या होता था, पहले हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होता था, तो सही तरबियत करने वाले बेशुमार लोग होते थे। फिर उस जमाने में माएँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो बच्चों को जब वो थोड़े बड़े हो जाते थे, समझदार हो जाते थे, एडोलेसेंट एज ग्रुप में आ जाते थे, तो वो खानकाहों में स्कॉलर्स उनकी तरबियत करते थे। तो उसी तरह से हमारे ये बड़े बड़े मुहक्किक, बड़े बड़े आलिम और लोग जो निकले हैं, वो इसी वजह से निकले हैं कि दे हैड बेस्ट द बेस्ट ऑफ मेंटोर्स एंड द बेस्ट ऑफ टीचर्स गाइडिंग देम एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, वेदर इट वाज देयर स्टडीज, वेदर इट वाज देयर पर्सनल लाइफ्स, चाहे वो कोई स्किल सीख रहे हैं या तिजारत करना सीख रहे हैं फॉर एग्जांपल, या कुछ भी। तो उन्हें जो टीचर्स मिले उन जमानों में, तो वो टीचर्स ने उन्हें ना सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाया, बल्कि उन्हें जिंदगी गुजारने का तरीका भी सिखाया थ्रू रोल मॉडलिंग। और हमारे पास सैडली आर यूथ डज नॉट हैव वेरी गुड रोल मॉडल्स एट द मोमेंट। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों को एक्नॉलेज करना चाहूँगा जिन्होंने चैट पे रिस्पॉन्सेज दिए। तो जितने भी पढ़े सबकी मैंने चैट्स पढ़ी है, मिस नूरुल वरा और मिस कशफिया, मिस सहर, जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, उस्मा तनवीर। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है बीइंग अ मेंटोर कि आप अपने एक एक मेंटी, एक एक ऑडियंस को रिस्पॉन्ड करें, मतलब नाम। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ wonderful audience. Thank you so much, Ms. Meher. Thank you so much, Ms. Rafia, for giving me this opportunity to speak. Thank you so much, Arid Sahab, and it was really a nice session. And the way you have delivered the session, it was also very nice, and it was very interesting. And I think all the participants have get so many good tips, because every teacher is a mentor of their students in a class. So thank you so much. And participants, this was the day end today, and please stay tuned with us for further exciting sessions, and tomorrow again we are having the session. So inshallah ta'ala, all the updates are available on the Nurul Huda pages. You are most welcome to visit the pages and like them, and regularly please see the updates on pages. So thank you so much, everyone. And there are so many participants here who are the presenters of future as well. So wish you all the best, and thank you so much for today. And Allah Hafiz, and stay connected with this International Virtual Teacher Leadership Conference Camp 2025. Allah Hafiz, and take care of yourself, everyone.